making tea. For how many people are you making tea for? For 3 people. Oh, Sad, pass me the sugar. how many sugar are you going to add in this? Sad, sugar is an uncountable noun, which means it cannot be counted. So instead of using many, you can use much. Oh, तो देखा आपने साथ ने दोनों केसेस में मैंने यूज किया, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जो चीज काउंटेबल होती है, मतलब जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं, वहां पर हम लोग मैनी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पून्स, यूटेंसिल्स, कप्स, स्वीट्स, एग्स एक्सेट्रा. और जो चीज काउंटेबल नहीं होती है, मतलब जिन चीजों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, वहां पर हम लोग मच यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, सॉल्ट, मिल्क एक्सेट्रा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसके लिए थम्स अप है. टिल देन स्टे सेफ, stay healthy.